Assalamu alaikum to the new session. In the previous session, we started with the psychomotor domain and we discussed the various taxonomies in the psychomotor domain, which include the Simpson psychomotor domain, the Harrow psychomotor domain, the Dave psychomotor domain. Then we discussed the Simpson in detail about the perception set, guided response, uh, then the mechanism, complex word response, adaptation, and origination. And then we discussed the subdivisions, the subdomain of the Dev's taxonomy of the psychomotor domain, in which it was the initial was the imitation, then the manipulation, then the precision, then the articulation, and the last one, the naturalization. In this session, we will start and we will discuss from the Haru psychomotor domain and what are the various subdomain of this subdomain and what are the keywords for them. So the subdomain in the Harrow psychomotor domain are the reflex movement, fundamental movements, perceptual abilities, the physical abilities, the skin movements, and the non-discursive communication. So start करते हैं reflex movement से उसकी examples और keywords के साथ हम एक एक subdomain को हम discuss करेंगे. So reaction that are not known, such as involuntary reaction that simply known as the reflex movement. Examples, this is the instinctive response. And keywords react, respond. So actually we react and we respond to a situation which is a very quick and sudden situation which we are not expecting, that is involuntary situation. So we how the students will react and respond to such situation. So moving to the second subdomain, this is the fundamental movement, और यहाँ से जो basic learning होती शुरू हो जाती है कि which is actually a single component of each procedure, of each concept has been practiced. So basic movements such as walking or grasping, which is required for that activity, for that motor activity, is learned, and each and every component is learned separately, and each and every learn has been mastered separately. Examples of such activities that execute a simple task. What are the keywords? Grasping an object, throw a ball, walk. The third is the perceptual abilities. That is some like a response to the different stimulus, like visual stimulus, the auditory stimulus, or the tactile discrimination. And the examples of such activities might be like track a moving object to recognize a pattern. So if you look at these, there is a kinesthetic component in that. There is a movement, a dynamic component in that. If we look at the activities, tracking a moving object, recognize a pattern. And the keywords which can be used for such pattern, that is to catch a ball, draw, or write. While the fourth one, the third last, is the physical abilities, that is to have some enhancement in the already learned activity, just to develop and to have more strength and more agility. Agility means that's quickness and easiness and movement. So stamina that must be developed for further development, such as the strength and agility. तो इसमें जो ability to move quickly and easily, ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से आएगा. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस पढ़ते हैं, तो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एज वेल एज एजिलिटी, सब के सब जो ये पैरामीटर्स है, ये उसी प्रैक्टिस, कंटिन्यू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही बढ़ती हैं. सो गेन स्ट्रेंथ, रन ए मैराथन, एंड कीवर्ड्स दैट इज एजिलिटी, एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ. So in this stage, the students will work and again practice, जिसकी वजह से उसकी क्या होगी? उस मोमेंट उसकी स्किल मोमेंट्स बन जाएगी. यानी जो अभी वो एक एक कंपोनेंट सीख रहा था, उस जो जैसे वॉकिंग, ग्रास्पिंग, उसके साथ वो परसेप्चुअल एबिलिटीज जो है ऐड करेगा, और जैसी परसेप्चुअल एबिलिटीज ऐड करेगा तो उसके साथ फिर उसमें कुछ एनहेंसमेंट लेके आएगा उसकी पैरामीटर्स में, उसकी स्ट्रेंथ में, उसके एंड्योरेंस में.
एजिलिटी लेके आएगा, और जब ये तीनों मिल जाएंगे सो दे विल बी अ स्किल मोमेंट, लाइक एडवांस लर्न मोमेंट इज वन कुड फाइंड इन स्पोर्ट्स और एक्टिंग। अब इस लेवल पर इसमें he have the ability to respond to stimulus, visual, auditory, kinesthetic, tactile discrimination. He have that enhanced parameters. He has that extreme strength and agility in that activity. He also have that the basic movements required for that activity. So when all these three have learned and mastered, so the end result will be a mastery and skill activity and skill moment. Using examples किस तरह हो सकते हैं? Using an advanced series of integrated movements, perform a role in a stage play or play in a setup series in a sports game, and keywords for such subdomain may be adopt, constructs, creates, modifies. This is that level which is in which the person is now expert, now is in elite, और यहाँ पे जो है वो न्यू पैटर्न जो है वो डिजाइन कर सकता है, न्यू पैटर्न जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एज उसके लिए जो रिक्वायरमेंट कंपोनेंट्स है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड जो सेंसेस है, उन सबको यूज करके एक न्यू पैटर्न डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट कर सकता है. And this is then when he adds some non-discursive communication, like we can say the body language, gestures, and facial expressions. Examples of such activity express oneself by using movements and gesture, and this ये तब आती हैं when the person have mastery in that activity. जब तक उसमें mastery या उसमें expertise उसकी नहीं होती, तो वो उसमें non discursive communication नहीं add कर सकता. So this is the last stage counter that Harrow taxonomy, that using up effective body language, gestures, and facial expression along with the other skillful activity, that is actually the last level जहाँ पे इस बंदा is now a very high level expert of that activity. And the keywords like their arrange, compose, and interpretation. So we can summarize all these three domains into four subdomain, which can be used for our students, which can be used for our the undergraduate students when we are going to teach them some critical skills, some physical examination or some diagnostic procedures. So उनकी जो critical skills जो है हम इन चार levels पर divide कर सकते हैं, P1, P2, P3 and P4. और इसमें ये जितनी भी taxonomies है, they are okay on their own level, उसकी level domain सब अपनी जगह पर, लेकिन हम इसको इन चार में इस तरह summarize कर सकते हैं कि पहले वन में जो है the students will just observe and imitate, and the teacher we will just demonstrate them. हम उनको demonstrate करेंगे कि ये process किस तरह होता है, ये diagnostic procedure किस तरह होती है, ये objective examination किस तरह होती है, subjective examination किस तरह होती है, या जो है हम कोई भी procedure उनको कोई भी moment जो है कोई भी physical test जो है, ये हम उनसे अगर कराए तो पहले हम इस एक्ट करेंगे, हम demonstrate करेंगे, and they will watch us, they will observe us, and they will imitate what we are doing and what we are doing, the way we are doing and the intensity we are doing. So all they will observe and imitate. In the P2, they will practice and we will observe. We will be the direct supervisor. We will watch them that in which aspect they are going to perform that activity. कहाँ कहाँ पर उनसे गलतियाँ होती हैं, कहाँ पर इनको करेक्ट करने की ज़रूरत है. सो हम वहाँ पर डायरेक्ट उनको फीडबैक देंगे, चूँकि डायरेक्ट सुपरविजन है, सो डायरेक्ट फीडबैक देंगे हम उनको. जबकि P3 में फिर वो दे विल कंटिन्यू देयर प्रैक्टिस, सो हैंड्स ऑन अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, एंड हम जो है फिर उसको इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेट सुपरवाइज करेंगे, इनको फीडबैक भी हम इनडायरेक्ट देंगे, बट इन द P2 P3 दोनों में जो है फीडबैक जरूरी होगी. P4 जो है दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज जस्ट व्हेन ही बिकम, जब उनकी सपोज वी कैन से दैट कि वो इस काबिल हो गया है कि या तो वो दूसरों को भी पढ़ा सकता है, या वो अगर जो डेमोस्ट्रेटर है, जो टीचर है, he or she is not available, he or she can handle the situation प्रैक्टिकली खुद विदाउट इन एरर जो कर सकता है, उसमें ऑटोमेशन आ जाती है,
उसमें जो है विदाउट हेजिटेशन वो एग्जीक्यूशन आ जाती हैं। यहाँ पर नो सुपरविजन नहीं होगी, एंड एक कंट्रोल एनवायरनमेंट से जो है नाउ ही कैन डू इन द रियल लाइफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर अगर हम समराइज करें कि P1 में क्या है कि जस्ट ऑब्जर्वेशन, नथिंग, ही विल डू नथिंग, द स्टूडेंट विल जस्ट ऑब्जर्व and imitate. In P2 and P3 he will practice but in a control environment, real life environment नहीं होगी, real patient नहीं होंगे, डमी पेशेंट होगी, सिमुलेटर्स होंगे। तो ये जो प्रोसेस, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है P2 P3 में, कि एक में फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द टीचर जो है, ये अवेलेबिलिटी मस्ट होगी। P3 में जो है फिजिकल अवेलेबिलिटी जो है, प्रेजेंस वहाँ पर जरूरी नहीं होगी, और थ्रू जो है कैमरा जो है उसको देख सकता है, या उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है बाद में वो कर रहा है, या वो किसी दूसरे बंदे के ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या बाद में वो इसके असिस्टेंस कर रहा है, उसके असिस्टमेंट कर रहा है। तो ये जो इनडायरेक्ट है दैट विल बी इन द P3 एंड P4 में क्या होगा कि वो ही कैन वर्क इन रियल लाइफ एनवायरनमेंट में कर सकता है विदाउट एनी सुपरविजन। दे विल बी लेस चांस ऑफ एरर, दे विल बी नो नीड ऑफ फीडबैक, एज इज नाउ एक्सपर्ट and he is very skillful for that activity. Let's do this example. The person in the blue shirt is going to learn how to throw arrow. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीर किस तरह जो है इसको मारते हैं। So that is an arrow and a bow, or he is just observing the person in the gray jacket. ये उसको सिखा रहा है कि, and the person in the blue shirt, he is watching very carefully what is the kinesthetic approach, उनकी हैंड किस तरह होगी, उसकी हैंडलिंग किस तरह होगी, क्या करना है क्या नहीं, यानी ये जो है उसके पास भी इक्विपमेंट है, बट हाउ टू थ्रू दैट एरो ही डोंट नो, या ही हैज नो एक्सपर्टाइज ऑन दैट। सो ही सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। दिस इज द साइकोमेट्रिक डोमेन P1, ही मीन द पर्सन इज गोइंग टू ऑब्जर्व हाउ टू थ्रो दैट एरो। सेकंड में विच डायरेक्ट सुपरविजन में उसने जो है वो अपने हाथ में लिए है, तीर कमान अपने हाथ में लिए है। नाउ द डेमोस्ट्रेटर जो है ये उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्वेशन में, इसकी ऑब्जर्वेशन में ये प्रैक्टिस कर रहा है, बट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरी है। सो दिस इज दैट P2 which we call as the psychomotor domain, P2 डायरेक्ट सुपरविजन। थर्ड में फिर क्या है कि इसमें इनडायरेक्ट सुपरविजन, इट मीन कि यहाँ पे अगर देखिए ही उसने अपनी एंड में एक टारगेट रखा होगा यहाँ पे, और ये मुख्तलिफ अटेम्प्ट करके टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट में कोई मतलब फाइट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई इस तरह की फाइट वगैरह नहीं है, कोई इस तरह डेंजर सिचुएशन नहीं है, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट है। ही इज जस्ट प्रैक्टिसिंग। अब इसको सारे जो बेसिक है वो उनको याद हो गई हैं, उनको उसने लर्न की हैं। जहाँ जहाँ पर कम गलतियाँ होती है उसको भी करेक्ट हो चुके हैं। सो ही इज गोइंग टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और आगे जाके वहाँ पर वो क्या करेगा, टारगेट हिट करेगा। And the instructor, he will just come later and will just assist that उसने कहाँ कहाँ टारगेट जो हिट किया है, सही टारगेट थी कि सही नहीं किया है। तो इट मीन एक सुपरविजन तो है फीडबैक इनको देगा, बल्कि इनडायरेक्ट सुपरविजन है। इस तरह डायरेक्ट उनकी, जस्ट लाइक इन दिस, डायरेक्ट उनकी प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है। तो ये जो है हमारा साइकोमेट्रिक डोमेन 3 हो जाएगा, विच वी कार्ड इज द इनडायरेक्ट सुपरविजन या कंट्रोल एनवायरनमेंट execution of any skill without the actual presence of the demonstrator, which uh, in a controlled environment. अक्सर हम वर्कशॉप अटेंड करते हैं। वर्कशॉप में हम क्या करते हैं, इनिशियली कोई भी एक्टिविटी, प्रैक्टिकल स्किल्स, तो जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो वहाँ पे डेमोस्ट्रेटर होता है, और किसी भी एक मॉडल पर, किसी भी एक डमी पेशेंट पर वो प्रैक्टिकल स्किल्स डेमोस्ट्रेट करते हैं, और हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसकी क्या है कि वो हमें ये इजाज़त देते हैं कि अब आज आप करें, और वो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, और जहाँ से हमसे गलती होती है वो हमें करेक्ट करता है कि इस तरह नहीं, इस तरह करे, इस तरह नहीं, इस तरह करे। जब हमारी सारी गलती या जो है वो ऑब्जर्व करते हैं और हमसे कोई गलती नहीं हो पाती, तो हमें फिर कहते हैं कि नाउ यू कैन कंटिन्यू, आप इसको प्रैक्टिस जारी रखिए। और वो किसी दूसरे कोच की तरफ चला जाता है, दूसरे वालों को फिर ऑब्जर्व करता है, दूसरे वालों को फिर गलतियाँ जो है वो करेक्ट कर देता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं,
डायरेक्टली जो है हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, बट स्टिल वी डोंट हैव द रियल लाइफ इन्वायरमेंट, वी डोंट हैव द रियल पेशेंट। हम अभी भी जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एट द एंड दोबारा वो आ जाता है और पूरा वो देख लेता है कि भाई हाउ वी आर गोइंग टू। तो ये तो है, ये P3 तक हो जाएगा। साइकोमोटर डोमेन, लास्ट डोमेन जो है, दिस इज P4। और जहाँ पे सुपरविजन नहीं होगी, जहाँ पे रियल लाइफ इन्वायरमेंट होगी, जहाँ पे सपोज वी आर डीलिंग विद पेशेंट, वी आर कंडक्टिंग some diagnostic procedure on real life patient in hospital, so that is जो है वी कैन से दैट विदाउट जो सुपरविजन हम खुद पेशेंट को डील करेंगे। दिस इज द लास्ट स्टेज एज वी लुकिंग हियर। जैसे प्रीवियस में हम देख रहे थे कि वो पहले ऑब्जर्व कर रहा था, फिर प्रैक्टिस कर रहा था अपने डेमोस्ट्रेटर की मौजूदगी में, फिर वो प्रैक्टिस कर रहा था विदाउट द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्टर, वो जो तीर कमान यूज कर रहा था। नाउ ही इज एन एलीट फाइटर, और ये इस तरह का एक इमरजेंसी फाइट लाइक है। और उसमें क्या होगा कि उसमें टाइम फैक्टर नहीं है, ही डोंट हैव टू थिंक कि कहाँ इन किसी भी उससे आ सकती हैं, यानी ही हैव टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द अनएक्सपेक्टेड वे। टारगेट जो है दैट इज एक काइनेस्थेटिक कंपोनेंट है इसमें। सो उसके लिए उसकी एक्सपर्टीज जो है ये इस लेवल पर अगर आ जाता है कि जब वो अपने टारगेट जो है सही तरीके से कंट्रोल में हेड कर सकता है, तो ही कैन इजीली जो है फाइट एट दैट सिचुएशन, दैट रियल लाइफ सिचुएशन। तो ये जो है हमारे 4 लेवल्स हो जाते हैं। अब हम किस तरह जो है एक कंडीशन में कर सकते हैं, सपोज वी हैव अ पेशेंट एंड उसके हम लंबर स्पाइन जो है या जो कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना चाहते हैं, तो पहले लेवल में क्या होगा कि असिस्ट द लंबर स्पाइन परफॉर्म्स डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट अंडर सुपरविजन हाई स्ट्रेस लेवल। तो ये हमारा इमिटेशन हो जाए कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर हो क्या, एग्जीक्यूट लंबर स्पाइन असेसमेंट इंडिपेंडेंट बट कैन नॉट परफॉर्म मार्च टेस्ट एटसेट्रा एंड कॉल फॉर हेल्प। अब यहाँ पर क्यों है कि हमारे यहाँ पे चूंकि वी नीड सम हेल्प, हमें गलती भी हो सकती है, हमें सुपरविजन की जरूरत है, तो हम जो है लंबर असेसमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम मार्च टेस्ट हमें नहीं करना था कि हाउ वी कैन कंडक्ट दैट मार्च टेस्ट इन आवर पेशेंट व्हेन वी आर डूइंग टू physically assess our patient with low back pain। तो जब इसको हम कंट्रोल कहते हैं। द लास्ट विच इज परफॉर्म्स ऑल काइंड ऑफ असेसमेंट टेस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी हेल्प, without any hesitation, without any error। Now suppose this is a situation, so identify the domain, name the level। अगर यहाँ पे हम करें तो ये कौन सा डोमेन है? This is the P3 domain। How it is the P3? As we can see here, the two नर्स जो है या टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है, ये डेमी पेशेंट पर वहां पर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट मीन दिस इज नॉट अ रियल लाइफ एनवायरनमेंट, इट इज नॉट P4। अटा ये खुद इन्वॉल्व हैं, खुद कर रहे हैं वहां पे, सो इट मीन दिस इज नॉट P1। वो इंटीमेट इमिटेशन तो नहीं करे, ऑब्जर्विंग नहीं करे, बल्कि दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व। तो ये P1 भी नहीं, तो ये P1 एंड P4 जो ये तो दोनों एक्सक्लूड हो गए। अब we can see here कि the person is listening to them as well as he is watching a screen। It mean कि the doctor, the demonstrator, the person with the headphones on his head, we can see here कि he is just watching on screen। It mean उनको कोई कैमरा लगा हुआ है and उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, या उसको लाइव देख रहा है from another room, and while they are doing the practicing them in another room। तो ये चूंकि इसकी फिजिकल वहां पर सुपरविजन जो है, उसके डायरेक्ट सुपरविजन नहीं है कि वो उसको रोक सके कि ये गलती है, ये गलत किया, इस तरह करो, उस तरह करो। तो ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट दे आर डूइंग, सो इट इज इनडायरेक्ट supervision। So we can say that this domain is the P3 level। अच्छा, uh, this is our next domain which is the affective domain, the Bloom taxonomy का। ये वो domain है जो which is related to the emotions, which is related to the feeling, which is related to the that feelings। अब ये जो डोमेन है, इसमें रिसीविंग, अटेंडिंग है, रिस्पॉन्डिंग है, रीडिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कैरेक्टराइजिंग है। तो इसमें से पहले जो रिसीविंग है, दैट सिंपल मीन कि द स्टूडेंट्स जैसे क्लास में बैठे हैं, सो दे उनको पहले से जो है दे विलिंग नीड टू सिट इन द क्लास, दे आर विलिंग टू अटेंड द
क्रिटिकल स्किल दैट डोमेन जो है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उन्होंने ओवरऑल पहना होगा, उनके पास टेटो होगा, दे विल बी वेल ड्रेस्ड। तो ये जो चीजें हैं, दीज इज दैट रिसीविंग में आते हैं, अटेंडिंग में आते हैं। अगर एक पर्सन जो है ही इज नॉट विलिंग टू बी अवेयर ऑफ द सिटिंग सिचुएशन की क्या होगा क्या नहीं होगा, उसने सपोज वो कार्डियोपल्मोनरी वार्ड पे जा रहा है, ही इज डोंट हैव टेटो, तो ऑब्वियसली दिस इज दैट component which should be there. So receiving attending mean ki willing to be aware of the setting or situation, use attention by choice, open to be experienced. रिस्पॉन्ड में क्या होगा कि वो ही इज विलिंग टू पार्टिसिपेट, वहां पे वो क्वेश्चन आंसर जो है उसके आंसर दे रहा है, वो वहां पर जो है एक्चुअली इन्वॉल्व भी है, वो सुन भी रहा है, और वो एक्चुअली जो है वहां पर प्रेजेंस है। तो दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ दैट अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। एंड ये जितनी भी अफेक्टिव डोमेन है, ये पैरेलल जाते हैं, दे आर रिक्वायर्ड parallel to the cognitive as well as specifically in the practical exam in the psychomotor domain. We need that affective domain of our students. मिसाल के तौर पर एक कोई प्रैक्टिकल जब वो मॉडल के साथ वो कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली हैंडल करना, उसके साथ जो है कोई डैमेज ना पहुंचाना, जहां से उसने उसको लिया था उसी जगह पर वापस रखना है। इसको अगर कंपोनेंट्स टुकड़े करने हैं जस्ट टू लर्निंग पर्पस के लिए, दोबारा से रीअरेंज करके वापस उसी तरह अरेंज करना है। तो ये सारे जो है चीज जरूरी है फॉर दैट क्रिटिकल लर्निंग। Corresponding में क्या होगा कि they will be willing, participating, obedient, volunteers, find satisfaction and participating and ready to respond. तो ये जो है when they are receiving attending, तो ये खुद बहुत पर अक्सर आ जाएगा। But if the person is unwilling to be aware or to attend a situation, उसके पास बाई चांस जो है वो अटेंड नहीं कर रहा है, यानी बाई चांस वो पहले से रिसीव नहीं कर रहा है, तो अब इसलिए उसकी जो है विलिंग पार्टिसिपेशन भी नहीं होगी। जब उसकी विलिंग पार्टिसिपेशन होगी तो अगेन क्या होगा, ही विल बी मोटिवेटेड to invest, to choose to behave in a certain way, frequently begin to identify with a behavior and commit to it. वो एक प्रैक्टिस जो है वो ऑब्जर्व जो इसने किया है, उसने ये उसी सब कुछ जो है उसी तरीका करेगा जिस तरह जो है उस बिहेवियर उसके लिए चाहिए। एंड देन ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा कि उसके लिए जितने भी वैल्यूज उसने रिसीव की हैं, उसने पार्टिसिपेट की, उसने वहाँ पर इसको की जितनी भी क्यूज उसने सेंस की है, वो सब की वो सिस्टमेटिकली जो है ऑर्गेनाइज करेगा। तो उसके लिए सारी वैल्यूज सिस्टमेटिक बन जाएगी, एंड ही कैन नाउ कंपेयर एंड कंट्रास्ट the bad and good. He now contrast and compare which one is the utmost, which one is the necessary, which one is necessary, which one is the high priority, which one is the lower priority. तो ये कंपैरिजन और कंट्रास्ट जब वो करेगा तो उसमें से क्या करेगा, वेल्यूज और चॉइस के दरमियान ही बिगिंस टू ऑर्डर एंड प्रायोरिटाइज द वैल्यूज, चूज टू कमिट टू सर्टेन वैल्यूज एंड बिहेवियर। और कुछ जो है वो नहीं करेगा, जो जरूरत के मुताबिक जो सबसे जरूरी हो पहले वो करेगा, वो एक सीक्वेंस से देगा। तो दिस इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग। कैरेक्टराइजिंग ये है कि जब वो इस तरह की करेगा तो ये उसकी करेक्टर बन जाएगी, उसकी पहचान बन जाएगी। ये उसके फिर वो जिस तरह के हम एडाप्टेशन वर्ड यूज करते हैं, तो इस तरह यहाँ पर भी जो है ये उसकी एक किसी भी सिचुएशन में वो इस तरह का करेगा कि देयर विल बी नो नीड ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग, बल्कि वो उसका एक कैरेक्टराइजेशन बन जाएगी। सो इन द लास्ट स्टेज ऑफ दैट affective domain, they will act, the student will act consistently due to internal belief, can articulate a philosophy or a worldview, can break down complex situations and respond accordingly based on the values developed and lives a code of personal behavior. So these are the different level of the affective domain, and we call is the A1, A2, A3, F4, and F5. This is again in some other explanation of these receive, then internalization, organization, waiting, and responding. So this is the receiving is the first subdomain, and then responding, then waiting, then organizing, and this is the naturalization or the internalization, or we can call it the characterizing. So these are the 5 subdomain of the affective domain. So we can summarize them as A1, A2, and A3, like notices and feels for the patient. This is the receptivity.
feels and acts somewhat, this is the response, जिसमें 2 and 3 and 4 दोनों आएंगी, and the last one which will be feels and acts with the understanding of the value system, that will be 3, which we call as the internalization, or we can call as the characterization. So keywords which can be used for each subdomain or sub-level of each level of the affective domain. So for the receiving, that is the acknowledge, ask, attentive, follow, given, give, listen, understand, attend, recognize. For the responding, answer, assist, add. यहाँ पे क्या है, वो critically जो है, he is willingly participating and giving, responding, and so this is, if someone is already willing to where to be from the situation, so obviously he will be willing to participate in that condition at that event. So greet, help, label, perform, present, tell, discuss, confirm, compile, तो ये सारी चीजें जो हैं ये रिस्पॉन्डिंग में आएगी, या नाम से शहर को वो रिस्पॉन्ड करेगा। वेलिंग क्या है, वो यहाँ पे जो है जिस तरह हम कहते हैं ना कि अच्छी और बुरे की तमीज, तो यहाँ पर वो चीज करेगा कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि विच वन इज बैड, विच वन इज गुड, और इसमें क्या करेगा, वो कंपेरिजन करेगा, वो कंट्रास्ट करेगा उसकी, और जब वो कंपेरिजन कंट्रास्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, उसकी वेलिंग उसको पता चल जाएगा, और फिर उसकी जब उनकी सारी वैल्यूज आ जाते हैं तो उसके फिर ऑर्गेनाइजिंग में वो क्या करता है, वन विद अदर कंपैरिजन करके उसमें से फिर सीक्वेंस करेगा, सिस्टमेटिकली करेगा, तो प्रायोरिटी पर रखेगा। तो वैल्यूइंग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, दिस इज द जस्ट रिवार्डिंग आ जाती है, अप्रिशिएट आ जाती है, चेरिश, ट्रेजर, डेमोस्ट्रेट, इनिशिएट, इनवाइट, बिलीव, जॉइन, जस्टिफाई, प्रपोज एंड रिस्पेक्ट। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेगा, वो एक्चुअली रीअरेंज करेगा, सीक्वेंस करेगा, सिस्टमेटिकली उसको अरेंज करेगा, प्रायोरिटीज की बेस पर वो इसको अरेंज करेगा कि टॉप प्रायोरिटी पर क्या वैल्यूज होंगी, और जो चॉइसेस एंड वैल्यूज है उसकी वो प्रायोरिटी की बेस पर सीक्वेंस करेगा। तो कंपेयर हो गया, रिलेट, सिंथेसाइज, systematize, clarify, and examine. Characterizing or internalizing, that mean act, discriminate, display, influence, modify, perform, qualify, question, revise, serve, solve, and verify. So these are some of the action verbs, words which can be used for the different levels of the affective domain. एक आइडियल लर्निंग पाथ क्या होगा कि जिसमें से हम जा रहे हैं, तो हम लोअर लेवल से हमने जाना है हायर लेवल की तरफ, और साथ साथ हमने इन तीनों को साथ में रखना है, यानी अगर उसके कॉग्निटिव डोमेन में उसकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है तो साथ साथ उसकी रिलेवेंट जो प्रैक्टिकल स्किल्स है ये भी एक उसकी लेवल भी जो है ये इम्प्रूव एनहेंसमेंट होनी चाहिए, और साथ साथ दोनों में जो है जो वैल्यूज है, जो वहाँ पे चॉइसेस है, वहाँ पे जो इमोशंस हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो रिक्वायरमेंट है, दैट ये उसके लिए जरूर उसके साथ होंगे। तो ये हमारा जो एक प्रोसेस जिसमें हम सिंपल से कंप्लेक्स की तरफ जाएंगे, फ्रॉम स्टेप टू स्टेप, जी हम एक में अगर मास्टरी हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट मास्टरी में जाएंगे, या हम अगर लोअर लेवल यानी इनिशियल बेसिक साइंसेस यानी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कुछ टीच कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, सो हमने यहाँ पे उनकी लास्ट जो लेवल है, जो एक्सपर्टीज लेवल है, ये उसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हमने उनसे लोअर लेवल से स्टार्ट करके एंड तक जो है उसको जाना चाहिए। तो दिस इज एन आइडियल लर्निंग पाथ, जिसमें से ये तीनों डोमेन जो है, इफेक्टिव डोमेन, दिस इज द साइकोमोटर डोमेन एंड द कॉग्निटिव डोमेन, जो है ये 7 साल चलते हैं, एंड फ्रॉम ईच लेवल टू अनदर, एंड व्हेन वी हैव दैट मास्टरी एट वन लेवल then we will shift to the next level. अब हम आ जाते हैं कि एक हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव पर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिटेल लेक्चर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफली थोड़ा सा बात करेंगे कि इन डोमेन्स जो हमने डिस्कस की हैं, इन सब में हम मुख्तलिफ लेवल्स के लिए हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट और लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो द प्रिंसिपल उसके लिए ये है कि इनिशियली वी शुड स्टार्ट विद द ब्लैंक statement. What is a blanket statement? We will discuss in the next slide that what we mean by the a blanket statement. After the blanket statement, we should have a clear target audience in mind. Yes, Abhi, I'm going to discuss and going this lecture to the students of CHP. Yeah, I am
जो है मैं कोई प्रैक्टिकल स्किल्स करूँ, मुझे पता है कि मुझे सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर की एमबीबीएस स्टूडेंट्स है, या सेकंड सेमेस्टर बीएसएन है, या सेकंड सेमेस्टर डीपीटी की स्टूडेंट्स है, तो मुझे पता है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, व्हाट इज द डिसिप्लिन, व्हाट इज द लेवल ऑफ माय स्टूडेंट्स, व्हाट इज द लेवल ऑफ माय आइडियंस। या जो है सपोज एक हाई सीनियर फिजिशियन है, और वो अपनी ट्रेनिंग ट्रेनीज जो इनके साथ है उनको कुछ डेमोस्ट्रेट कर रहा है, तो उसको ऑब्वियसली उनको बेसिक लेवल पे नहीं जाएगा, ही विल एक्सपेक्ट कि दे शुड रिस्पॉन्ड, दे शुड execute at the higher level, which is the top level, because they have to work there in an independent and real life environment. But we can't expect such expectation from the students of second semester, second year, because still they don't have to be practice in real life environment. So वहाँ पर हम P3 से ऊपर नहीं जा सकते, हम P1 P2 P3 जो है ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। एंड इफ यू आर आप एज अ टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं ट्रेनिंग्स की पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पर हम जो है P4 जो है भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट शुड स्टार्ट विद एक्शन वर्ब, ये कुछ प्रिंसिपल हैं, यानी हमें ब्लैंकेट स्टेटमेंट से स्टार्ट लेना होगा। हमारे टारगेट जो आइडियंस ये हमें क्लियर होंगी, वेरी स्पेसिफिक होंगी। हमेशा हम स्टार्ट विद एक्शन वर्ब से लेंगे, और हर एक के लिए हमने एक्शन वर्ब डिस्कस की है कि जो अफेक्टिव डोमेन है, या वहाँ पे साइकोमोटर डोमेन है, या जो हमारा लास्ट पहला वर्ड हमने डिस्कग्रेटिव डोमेन, हर एक लेवल के लिए, हर एक सब डोमेन के लिए हमने एक्शन वर्ब जो है और डिस्कस की हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है दिस शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिग्निफिकेंटली ग्लोबल एंड नॉट रिस्ट्रिक्टिव। इट शुड बी, जैसे हमने इट शुड बी स्मार्ट, एज वी हैव डिस्कस इन द initial lecture about the cognitive domain, how our objective will be, how a good and effective learning objective should be. So it should be smart, it should be specific, it should be measurable, it should be achievable, it should be relevant to the discipline, and it should be time bound, it should be realistic as well. So these are some of the characteristics and some of the principles of construction of the learning objectives based on these Bloom taxonomies, which is the cognitive, psychomotor, and the affective domain. So blanket statement ये है कि हम लिखेंगे क्या at the end of the, यहाँ पे हम लिखेंगे session course 1 year 2 year, at the end of period, at the end of this lecture, at the end of this 1 hour, at the end of this workshop, and the end of this module, and the end of this curriculum. So we can write, हम उस specify करेंगे। So at the end of, फिर हम उस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स की डिस्कस करेंगे कि सपोज एट द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड सेमेस्टर ऑफ डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, विल बी, शैल बी, शुड बी, एंड उसके बाद हम जो है एक्शन वर्ब शुरू करेंगे, एबल टू हिज और हर एबिलिटी। नाउ यूज द measurable एक्शन वर्ब टू explain the objective. तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो है जो एग्जांपल के तौर पर हम कॉग्निटिव के एग्जांपल दे देते हैं कि जो C1 C2 C3 के हैं, जैसे ये मुख्तलिफ हमारे एक वोकेबलरी, एक लिस्ट है डिफरेंट एक्शन वर्ब की, तो यहाँ से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एंड वी विल देन कंस्ट्रक्ट आवर ऑब्जेक्टिव्स। लाइक अगर हम लेक्चर्स के स्टार्ट में जाएं, जो अभी हमारे कुछ जो ऑब्जेक्टिव हमारे क्या थे, तो हमारे ऑब्जेक्टिव ये थे बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। सो दैट वाज दैट blanket statement कि by the end of this presentation the students will be able to find learning objectives, discuss the Bloom taxonomy, discuss the Simpson taxonomy, discuss the Bloom taxonomy effective domain, and construct the learning objectives. So we are now at our last uh, objective, which is construction of a learning objectives. तो ये जो है हमारे लास्ट कुछ ऑब्जेक्टिव था, जिसमें हम प्रिंसिपल डिस्कस की कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द learning objective on the basis of the action verb which we have used for the different level and different subdomain of the three cognitive, affective and psychomotor domain. कुछ ऐसे verbs होते हैं जो हम यूज नहीं कर सकते because they are very generalizable, they are not specific, like know, understand, because we can't measure the
knowing of some, understanding and believing of something. So हमने पहले कहा था कि should be specific and measurable. So we can't measure the knowledge of someone, the understanding and thinking of someone. But that's why these words should not be used like believe, have faith, and become familiar with, understand, enjoy, appreciate, beware of, none. We, because we don't have such a, quantitative parameter to use all these verbs. So why not to use this? Because they are open to several interpretation and are not measurable. So don't be restricted. Examples क्या हो सकते हैं? At the end of the session, the learners will be able to enlist anti-inflammatory drugs. अब ये जो है, this is हमारा ये पहला C1 है. ये कॉग्निटिव डोमेन है, सिर्फ लिस्ट करेगा, यानी ये नहीं करेगा कि कौन सी ग्रुप से उनका ताल्लुक है, उसकी क्या क्या जो है मैकेनिज्म है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, या उसकी जो है एडवर्स इफेक्ट क्या है. नो, दैट जस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग किसी भी ग्रुप की, लेकिन सिर्फ उसकी एक लिस्ट बताओ. इन लिस्ट द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनुअल थेरेपी, लाइक वी हैव डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनुअल थेरेपी, लाइक दिस इज द, ओके, मोरेगन कंसेप्ट हैं, या वी कैन से दैट द मैनुअल थेरेपी में कहने, सही है, मैं आ रहा हूँ. सॉरी फॉर दैट लिटिल बिट इंटरप्रिटेशन. अच्छा, थोड़ा सा हमें ये जो हम डिस्कस कर रही थी ब्रेक से पहले, हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया. एक थोड़ा सा इशू आया था. एट द एंड ऑफ द सेशन द लर्नर विल बी एबल टू एनलिस्ट द एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनलिस्ट द डिफरेंट स्कूल ऑफ मैनुअल थेरेपी. तो पहले में हमने कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया कि ये C1 है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, सही है. सेकंड पे हम अगेन C1 है कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनुअल थेरेपी, यानी मुख्तलिफ जो कंसेप्ट है, मैकेंजी है, मेटलैंड है, मोलेगन है, किल्टन बर्न है. तो ये मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ मैनुअल थेरेपी जो है ट्रीटमेंट है, तो सिर्फ उसके नाम बताने हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ECG. अब यहाँ पर अगर देखें तो उसको, ये हमारा क्या है, दिस इज द C4 लेवल है. वाई? बिकॉज उसमें उसने क्या है, उसने कंपोनेंट में डिस्कस करना है कि किसी भी ECG का जो ये P वेव है, क्यू है, RST, इस तरह इंटरवल्स है, ये है, उन सबको उसने कंपोनेंट में डिवाइड करना है. एंड ईच कंपोनेंट को फिर उसने देखना है कि ईच इन कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे नॉर्मल है कि नहीं है. तो इससे पहले उसने क्या करना होगा, उसने ECG के बारे में उसकी जो C1, C2, C3 सब उनकी होगी, तब जाके जो है he can differentiate between the normal and abnormal ECG. To justify the investigation in case of high grade fever in a new net, again जो है, this is the higher level of which is C4 कि जिसमें वो yes we can, this is C5 is where कि वो justification करेगा कि हम क्या करें when there is a high grade fever in new net. Describe the physical therapy management plan for the acute low back pain. Again, this is the higher level of the जिसमें we can say this is the C5. And again this C5 भी हो सकती हैं, C6 भी हो सकती हैं, कि जिसमें क्या होगा, he have to evaluate the new condition, और फिर उसके लिए मैनेजमेंट वो प्लान करनी है. So this is the higher level of that cognitive domain. So that was all about our Bloom taxonomy, in which we discussed the three domains. Here it was our class. This is the VC of the Khyber Medical University. When we were there for the CHP batch 12, and that was 2015. At that time, I was lecturer in CS University system. So thanks to all of you. Inshallah, in the next session, we will have a lab session. इसमें हम डिस्कशन करेंगे 1-to-1. कोई भी किसी की क्वेरी हो, नेक्स्ट वीक इन वीकेंड इंशाल्लाह असाइनमेंट भी दिया जाएगा. असाइनमेंट जो है वो दैट विल बी शेयर्ड सून टू ऑल ऑफ यू. और फिर वो टास्क जो है वो एक जो डेट हम इंशाल्लाह उसमें फिर आप लोगों को बताएंगे कि किस डेट पर आप लोगों ने सबमिट करें असाइनमेंट. तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा. अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.